just let me set this light on. Yes. So all of you, I have sent a note that I was having troubles with my voice, and there was some sort of issue which have been resolved, right? So actually we are going to catch up on day 24, because the when I saw the video there was no voice, and day 25, which is going to be on unit on Akhiras bag, and then day 26, which is on basically a question answer session on what we have been doing regarding Palestine, or any other question and answer, because we have not been doing question and answers like for a week or more. So talking about day 24, actually I learned a lesson altogether. I learned a lesson that day, right? When my voice went off, totally off. So meanwhile, my my mic was having issues and I was getting it all repaired. My all alternatives also went down. So I had nothing to come up live, so I could talk to you about it and I could continue with my show, which actually made me think and on something which is actually quite relatable to day 22 and 23 that we have done, all about self-sufficiency and the boycotts and everything. Fortunately, I know driving, which actually has made my life easier. So how it has made it easier, you must be wondering that how आपकी ज़िंदगी ड्राइविंग से कैसे आसान हो गई। आप एक जगह से दूसरी जगह खुद आ जा सकते हैं, खुद मुख्तार हो जाते हैं। तो ये ही एहसास जो है इंसान को बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपने छोटे छोटे ज़िंदगी के काम जो हैं वो आप खुद कर सकते हैं। सो दैट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, राइट। एक तरफ तो ये सोचने के लिए यही चीज़ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बेसिकली इफ़ यू थिंक दैट द रीज़न इज़ अबाउट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्ट की, या ट्रांसपोर्ट का जो लेटेस्ट मोड है, आई एम एबल टू ड्राइव दैट एंड आई एम एक्चुअली गोइंग, बेसिकली अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो कि है, पर that's only one reason. All right, it's a blessing, no doubt, but this blessing couldn't have been there, ये तब तक ना होती, या इस दुनिया में वजूद में ही ना आती अगर इंसान को अकल अल्लाह ने ना दी होती, राइट। एक सीधी सी बात है। So that's one reason, but often but there are other things, other things than driving also. Like I can walk on my foot, or I can cycle to get my stuff done, right? So I have alternatives also for that, and I know actually how to drive the car, right? So the point to tell you all this, ये सारा कहने का मकसद क्या है, that if I were not given the ability to drive, right? If I were not blessed with this ability that I should drive, then this independence of moving here and there, getting my work done so quickly, wouldn't have been possible, right? And many of my things in life would have been stuck, or या फिर वो स्टॉप हो चुकी होती, या फिर वो बहुत डिले हो रही होती. So this is what might be coming to your mind when you're thinking about that, how transport has made my life so much easier,
is just because you become independent, and then your life becomes so easy, and that you can move here and there with ease, especially when you know how to drive, and आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और अगर आपको नहीं आ रहा होता या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो व्हाट बेसिकली हैपन्स इज़ योर लाइफ स्टॉप्स, राइट? आपको ऐसे ही लगता है। और यही कुछ टेक्नोलॉजी के साथ भी है, यही कुछ आपके खाने पीने के साथ भी, की आदतों के साथ भी है। सो वट एवर हैबिट यू डिवेलप, उसके साथ यही कुछ है। लाइफ स्टॉप नहीं होती। सो whatever I have talked till now, these all statements are false statements. Alright? ये सब false statements हैं। Again, why? हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि अल्लाह ताला would have provided me with any other alternative or any other solutions so that I can get, or I can handle my solutions. So it is Allah who is making me self-sufficient by any way, and He will make me self-sufficient by any way. So in these 2 days, I learned more about this, and I really wanted to come up and share this experience with you. So it's not being independent only, it's working hard and then trusting Allah. And about working hard, I mean that अगर आपके पास कोई वे आउट नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई टू स्ट्रगल। आपको खुद चलना पड़ता है सोल्यूशन ढूंढने के लिए। आप जब तक अपना सोल्यूशन नहीं ढूंढने निकलेंगे, अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा। और अगर आपकी मदद हो भी जाती है तो एटलीस्ट उसका शुक्र अदा करें। वो सेल्फ सफिशिएंसी या जो कुछ भी आप सोल्यूशन आपको मिल रहा है वो आपके अपनी बेस पे नहीं मिल रहा है, इट्स अल्लाह। सो ट्राई टू अप्रिशिएट हिम। सो टॉकिंग अबाउट यूनिटी, द डे 24, आई विल जस्ट समराइज इट बिकॉज वो मैंने पूरा 20 मिनट्स का सेशन किया था, एंड बिकॉज टाइम कम होता है हमारे पास और 3 दिन हमने तकरीबन आज कवर कर लेने हैं। सो यूनिटी से स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल मुख्तसर सा बताऊंगी कि व्हाट आई डिड ऑन दैट डे वाज, आई टॉक्ड अबाउट कि हम लोग फ़रोई बातों के पीछे, पेटी इशूज़ के पीछे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है? एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से हम असल से बहुत दूर हो गए। So one of the things that we can learn from Palestinian people is that whatever is happening there, वो लोग एक दूसरे की मदद नहीं छोड़ते। They still till date are united. एक जत्थे की तरह है वो, बेशक कम लोग हैं लेकिन एक जत्थे की तरह है। और यूनिटी इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर फेथ। उनका फेथ का स्ट्रॉन्ग होने का वन ऑफ द रीजंस इज दैट अगर कोई एक शख्स थोड़ा वीक है तो जो द स्ट्रॉन्ग वंस कम फॉरवर्ड कि वो उसको तसल्ली देते हैं, उसको होप देते हैं, उसको अल्लाह का के ऊपर ट्रस्ट करना याद दिलाते हैं। So this is their community they have built, and their community is built on supporting each other rather than taking out एक दूसरे के जो ऐब हैं वो तलाश करते हैं। So अगर हम सब मुसलमान ऐसे यूनाइट हो जाएं, so just think that how much difference can we make in this world। मगर हम यूनाइटेड नहीं, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग।
देखा जाए तो जब हम कुरान पाक का अगर आप दौरा करते हैं तो ये जो फ़िरका वारियत है या ये जो ग्रुप्स में हम डिवाइडेड हैं, बेसिकली द people who were divided in groups, especially Bani Israel was divided into 12 groups, जिसका जिनके लिए 12 चश्मे भी फूटे और हर चश्मा हर एक कबीले का था. So actually that was actually a sort of punishment for them that they got divided. चले ग्रुप्स तो अलग बात है क्योंकि it creates diversification, but later on ये जब ज़ायनिस्ट आए हैं, what we did on day 23, जब ये ज़ायनिस्ट आई है, ज़ायनिस्ट मूवमेंट आई है, so actually it created two groups जो कि एक राइट पाथ पे थी और एक रॉन्ग पाथ पे, and it created confusion. So people actually didn't know कि किस साइड पे जाना है. Why this happened? Because जो उनके उलमा थे, चाहे क्रिश्चियंस को हम देखते हैं तो जो उनके उलमा हैं उन्होंने उनका दीन बहुत मुश्किल बना दिया है लोगों के लिए. और अब यही काम अगर हम देखें तो it's happening with Islam. There are so many views that we don't know which one to follow, which one is right and which one is wrong. Why? Because we lack the knowledge. हमने कुरान से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा. And Quran tells us to wa'tasimu bihablillah, hold fast to the rope of Allah. And it tells us that we are ummatun wahida. हर कौम को अल्लाह ताला ने एक खासियत दी है और हमारी कौम की खासियत क्या है कि वी आर उम्मतुन वाहिदा, हम एक उम्मत है. हमारे जिस्म का एक हिस्सा पूरे तरीके से छल नहीं है और हमें अभी भी होश नहीं आ रही. So it's about time that we get united. We should leave all the conflicts या हमारे जो एतराज़ात हैं उनको बिल्कुल साइड पे रख लेना चाहिए. इस टाइम जो ज़रूरी है, what's necessary should be done. So this was actually a summary of day 24. Now question arises, basically this question is actually the starting point of day 25, the bag of Akhiras. That why should we do it? हमने ये सब क्यों करना है? अब तक जितना हमने कवर किया है from day 1 to day 25, आज तक जितना भी कवर किया है, हमने ऐसा करना क्यों है? अब मैं आपको पैलेस्टीनियंस की एग्जाम्पल दूंगी because it is Palestinian week and we are going to cover the lessons that we can learn from them, right? तो एक सवाल जो मेरे ज़हन में आया, जो मैंने देखा, आपको क्या लगता है कि क्या पैलेस्टीनियंस जो हैं रिटेलिएट नहीं कर सकते? Can't they retaliate? Is it really difficult for them? हाल ही में, ये कोई ज़्यादा साल नहीं हुए, we have seen people of Afghanistan fighting for their own land and they were quite successful peacefully. उन्होंने कोई दंगा फसाद नहीं किया. They have sent all the American soldiers back peacefully. And they actually created their own weaponries and it was quite advanced in technology. So क्या आपको क्या लगता है कि क्या यही टेक्नोलॉजी या यही इस तरह की रेजिस्टेंस
या ऐसा कुछ भी ऐसी वेपनरी क्या फ़लस्तीनियों के पास नहीं होगी? ज़रूर है, एंड दे कैन रिटेलिएट, बट what they are waiting for? They are waiting for the Akhirah. They know that Allah has promised them the Akhirah only if they walk on the path जो अल्लाह ने उनके लिए चुनी है. So they are waiting for the right hour. And that right hour, when that right hour comes, Allah will give them victory. And they know it very well. So what's their focus is on to put all those things in their bag of life, where they can, they are just preparing that bag. जैसे आप स्कूल जाते हैं या बच्चे को स्कूल भेजते हैं, you put all their stuff in their bag. लंच ले रखते हैं, उनका टाइम टेबल देखते हैं, एवरीथिंग इज़ बीइंग चेक्ड, राइट? उनकी ज्योमेट्री बॉक्स देखी जाती है. सो जस्ट लाइक दैट, दिस बैग ऑफ लाइफ शुड कंटेन ऑल दोज थिंग्स जो कि जितना आपसे हो सकता है, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ अल्लाह, देन वॉकिंग ऑन हिज पाथ जो अल्लाह ताला ने आपको बताई है, हमारे लिए चुनी है. The deeds that we do and how we treat others and what we do to help them. So each time you're putting that into your bag. And when the time comes, जैसे ही जब आप बैग पैक कर लेते हैं, आपकी बस आ जाती है, so that means आपका टाइम हो गया स्कूल का. इसी तरह एक टाइम हमारा होता है हमारी मौत का वक्त, ठीक? और जो हमने जिस तरीके से अपना बैग कैरी किया हुआ होता है, हम बस उसी तरह ही यहाँ से चले जाते हैं, राइट? जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, उसी तरह हमारे लिए भी आखिरत का घर है. वी आर प्रिपेयरिंग दिस बैग फॉर द आखिरा. हम ये जो बैग प्रिपेयर कर रहे हैं, यही हम अपने कमर पे लाद के जाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल बी क्वेश्चनड ऑन दैट. वी विल बी शोन कि हमने अपना पेपर कैसे सॉल्व किया. और तो आज बेसिकली इट्स दैट डे जहाँ टेस्ट तो ख़त्म हो गया, इट इज़ गोइंग टू बी दैट रिजल्ट डे. So these people, these Palestinians actually can retaliate. लोग अच्छी तरह retaliate कर सकते हैं, but they are waiting for the hour, and they know that the right hour is not what they define right. It is Allah who defines right and wrong. So they are waiting patiently. सब्र कर रहे हैं, और अल्लाह उनको पता है कि अल्लाह उनके सब्र का अजर ज़रूर देगा. That's why they are giving away each and everything in the way of Allah, even kids. And may Allah accept it from them. So what we have to learn from them is in this question that what we are preparing for the bag of Akhirah. How we are going to carry that. Because if it might have all those things that are heavy on the bad side, on the negative side, then how, जब बैग भारी हो जाता है तो उसको लेके जाना भी मुश्किल होता है. What keeps it light is के you follow the timetable, right? So it's like following that timetable to keep your bag light.
बस उतना करना है जितना आपको कहा गया, नॉट डूइंग टू मच, नॉट डूइंग टू लेस, अपनी सकत के मुताबिक. सो what are you bringing, what are you taking in this bag of akhir? Just think on that question कि हमारे पास क्या है, हमने ये सब करना क्यों है. Because you have to take everything. आपने अल्लाह से कितना जुड़ने की कोशिश की है, हर एक स्टेप, ईच स्टेप काउंट्स. छोटी से छोटी नेकी भी आपकी काउंट होगी, छोटी से छोटी बुराई भी आपकी, जब तक आप उसको सरजद ना कर लें, आपसे सरजद ना हो जो वो काउंट होगी. सो वी हैव टू वॉच आवरसेल्व्स. हमें अपने ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए. So now there was a question. Now moving to the day 26, which is basically today's day. It was about question and answer session. One of the question is already answered कि किसी ने मुझसे एक्चुअली पूछा था कि why they aren't retaliating. So based on that question, actually I had to do this a whole day, and that was, it came to my mind that why not do the bag of Akhira first. It might answer the question, right? Now the second question is from a sister from Mississauga, Canada. She says that why is Qadr in the last Ashra and not first or second? So she's a reverted sister. Mashallah, this is such a big question. क्या हमने कभी ऐसे सोचा है कि हमने या आपने कभी ऐसे सोचा है कि कदर आखिरी अशरे में ही क्यों है? अगर हम में से कोई ऐसा सवाल करेगा तो बहुत से लोग कहेंगे कि अच्छा ये तो गैब का इल्म है. ज़रूर गैब का इल्म है, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक it was very important question. That's why I have brought it on the screen. So now let me tell you. अब इस चीज़ को आंसर करने के लिए पहले तो मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी, so that you can understand. For example, you are in the race. आपने रेस लगानी है, ठीक है. Every race has a finish line. Every race has a lot of participants. And in order to finish, जब मैराथन होती है, there are people जो बहुत जल्दी थक जाते हैं. वो लोग होते हैं जो अपनी पेस को इतना तेज रखते हैं, शुरू में इतना तेज रखते हैं कि उनकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है. सो दे गेट आउट ऑफ दैट रेस. और कुछ ऐसे रेसर्स होते हैं उनकी पेस बहुत स्लो होती है, दैट दे रीच द फिनिश लाइन हार्डली, कि वो मैराथन को जीत सके. सो बस वो वहीं रुक जाते हैं. जब कोई जीतता है, जो फिनिश लाइन क्रॉस करता है, बाकी रेसर्स वहीं रुक जाते हैं. सो कीपिंग द पेस स्लो एक्चुअली ऑल्सो is not so ideal, right? So there is a trick to win a marathon, right? And that trick is that not to run so fast, not to run so slow. It's better कि आप slow से start करें, ठीक है. Go slow to medium, and अगर कहीं थक जाते हैं then again slow, then medium.
सो दैट यू कैन एक्चुअली एक पेस बनाए, एक पैटर्न बनता है. जो लोग टेक्निकली मैराथन को जीतते हैं बेसिकली उनका एक पैटर्न होता है रेस को विन करने का, और उसमें उसकी जो रनिंग पेस होती है ना, दैट मैटर्स. सो कीपिंग द राइट पेस इज वन ऑफ द थिंग्स टू विन अ मैराथन, वन ऑफ द टिप ऑफ मैराथन. बट अल्टीमेटली क्या होता है, द हार्डेस्ट थिंग इज द फिनिशिंग लाइन. फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना इज द स्ट्रगल. आप स्टार्टिंग से शुरू हुए हैं, स्टार्ट से शुरू हुए हैं, एंड यू हैव टू डू अ लैप, मे बी 3 or 4 laps. Let's say if it is a race of 3 or 4 laps, आपने एक लैप किया, दूसरा लैप किया, थर्ड लैप किया. By the fourth, the last one actually is the hardest to do, because कोई भी शख्स जब जो एंडिंग होती है ना उसके लिए सबसे हार्डेस्ट होती है, और एंडिंग पे अपने आप को मोटिवेट करना इज द हार्डेस्ट थिंग. सो बेसिकली अल्लाह ताला ने एंडिंग जो है ना, एंडिंग में भी यू नो दिस इज व्हेन आई थॉट अपॉन योर क्वेश्चन एक्चुअली, आई थिंक इसका वन ऑफ द रीजन इज दैट Qadr is in the end of Ashra to keep you in that pace. Number one. Number two is that due to, you know, difficulty in following the path, अल्लाह ताला की राह में चलना कोई इतना भी आसान काम नहीं है. बाहर के लोग जो होते हैं वहाँ से मुश्किलात बहुत आ रही होती हैं. ऑलराइट, इंटरफेरेंसेस बहुत आती हैं, अट्रैक्शंस बहुत आती हैं. So it's really hard to actually, I must say that, holding on to deen. Alright, it's really hard to hold on to your deen. So these last days actually आपको already टायर कर चुके होते हैं after so many fasts, that at the end आपकी एनर्जी भी लूज हुई होती है. आप बस एक क्या कहते हैं, you just want to finish it by any way, right? But in order to win that race you need motivation, right? तो अल्लाह ताला ने कदर रख दी, इसमें सवाब दुगना है. So anyone who is about to give up the race after these 20 days can pace up, या जिसने अब तक स्लो रखी है अपनी पेस, can actually pace up their speed. वालेकुम अस्सलाम हुरैरा. ऑलराइट, सो जिसने अपनी पेस को स्लो भी रखा या तेज़ रखा, अगर वो थक गया तो भी वो सवाब अभी भी कमा सकता है. सो दैट्स आवर काइंड ऑफ मोटिवेशन अल्लाह हैज़ गिवन यू बाय गिविंग यू कदर इन द लास्ट 10 nights. और इसलिए मे बी वन ऑफ द रीजन्स, इट इज़ वन ऑफ द रीजन्स के द नाइट इज़ नॉट मैंशनड एग्जैक्टली, ताकि आप कंटिन्यूसली एक प्रोसेस में रहें, एक मोमेंटम में रहें टू डू गुड मोर एंड इवन मोर, ताकि आप और अच्छाइयाँ कमा सकें. So this might be one of the reasons that Allah has put Qadr in the last 10 days for motivation. So just stay tuned for tomorrow. Inshallah, we are going to do a whole episode on this, which is day 27, and holding on to deen. Basically this qadr is actually one of the ways which actually tells you that how to hold on to your deen.
Let me see. You Indian? No, I am from Pakistan. All right. So this is what we are going to do tomorrow. Inshallah, see you tomorrow with another uh, episode and another session. Allah Hafiz and Fi Amanillah. And keep praying for Palestine because it's 27th night here. So, let's not forget our brothers and sisters there. The more we pray, the more Allah will listen, right? So I just came up with this that we can actually chain it up, a zikr. We can chain a zikr for them. So you can pass on to this video to everyone, right? ताकि वो इस चीज़ से इनको सुन सके. Let's let's do the zikr of Ya Kahar, Ya Kahar, Ya Kahar for Palestinians. Alright? So that Allah might protect them more. Because har dafa 27th night ko, the night of Qadr especially, is the hardest for them. Masjid Aqsa pe raid hota hai. So, let's do this zikr, all of us. Ya Kahar. Let's make it a chain. Alright? बेशक आप मुँह ज़बानी किसी को बता दें या फिर वीडियो शेयर कर दें so that by the end they see this message. पूरी अगर ये देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, so they can actually start reciting it. So let's do it together. जितना ज़्यादा जिक्र होगा उतना अच्छा है. Keep this in mind कि अल्लाह ताला उनको प्रोटेक्ट करे. Do this zikr with this niyat कि may Allah give them victory over these oppressors. So see you tomorrow. Allah Hafiz.